Good morning, ma'am. Good morning, Daksh. Good morning, Arav. Good morning, ma'am. ये कैसे चमत्कार कैसे हो गया? प्रगुण कैसे आ रहा है मीटिंग में आज? गुड मॉर्निंग किड्स. गुड मॉर्निंग सुशांत. Good morning, ma'am. प्रगुण बेटा आप कैसे आ गए? सब ठीक है? Yes, ma'am. अरे आपने आज ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की दिक्कत कैसे ले ली? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब कुछ ठीक है? Yes, ma'am. फिर Yes, कैसे? ma'am. हाउ मतलब हाउ कम इज इट पॉसिबल? आई एम अनेबल टू मैम मैं डाइजेस्ट. स्कूल तो आता नहीं हूँ। मैम मैं स्कूल तो तो आता नहीं सोचना. हूँ, मैंने सोचा ऑनलाइन क्लास ही लेता हूँ। ओ, वी आर वेरी ब्लेस्ड, वेरी ऑब्लाइज्ड कि आप आज हमारी क्लास में आए. थैंक यू सो मच सर. मैम हु? स्काई शर्मा भी आए, इस बात की तो खुशी है ही. प्रगुन भी आए, इस बात की भी खुशी है. बिकॉज ये आते नहीं है ना वीवीआईपी लोग. जी चलिए फिर क्या करना है हमें? या विच चैप्टर वर वी ऑन? Ma'am, we have to start chapter 7. We have to start chapter 7. Then can any one of you please send me the PDF of the chapter? आज हम एक काम करते हैं, सब ऐसे ना वीडियो बंद करके ही क्लास लेते हैं. मैं भी बंद कर देती हूँ अपनी वीडियो. अब अच्छा लग रहा है. व्हाट्सएप कॉल ही कर लेते हैं. इस पे क्यों है वो? Who is sending me the chapter? Tell me. कोई भेजेगा नहीं भेजेगा? Yeah, you guys are. Sushant, beta, can you please send me the PDF or like for pictures only, not the PDF? Sushant, Ma'am, I'm sending. thank you, Kunjal. Please keep your videos on, kids. Keep your videos on. प्रगुण, अब आप आए तो वीडियो भी ऑन कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा हमें. हमाद कितना प्यारा बच्चा है. हमाद काफी लाइट है बेटा, लाइट कम कर लो थोड़ी, दिख रहे हो ज्यादा. ओ माय गॉड, क्या हो गया प्रगुण? तुम आए भी हो, तुमने वीडियो भी ऑन कर ली. आज तो मतलब न्यू ईयर न्यू भी हो रखा है क्या? हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन बाय द वे. Morning, ma'am. थैंक यू मैम. Thank you. Same to you, ma'am. थैंक यू सो मच. सो व्हाट आर यू डिड इन द वेकेशन? किसने क्या क्या किया? नथिंग. नथिंग. Ma'am, nothing, ma'am. Sleeping in, ma'am. स्लीपिंग इन रजाई. रजाई को इंग्लिश में क्विल्ट बोलते हैं दक्ष. ओके. क्यू फॉर क्विल्ट पढ़ा था छोटी क्लासेस में. बेटा हमाद, आपका वीडियो बहुत ही क्लियर है, आप इसे बंद कर लो, इतना ज्यादा क्लियर हम देख नहीं पाएंगे. वेरी गुड. Okay, ma'am. इतने टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, तो रुद्र भी आ गया. सब ठीक है तुम लोग? कैसे आ रहे हो आज? मैम मैंने कही थी उसको आने के लिए, हम्म. खाना खा रहा था मैम। वही तो मैं सोचू. That's what I was wondering. How come is it possible? मैंने मैम अंकित को कहा अभी आने को मैम, तभी आया. थैंक यू सो मच स्काई एंड प्रगुन. आप लोग नहीं होते तो ये क्लास कैसे हो पाती? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का. So only few days left for class 8. तो तुम लोग क्लास 9th में आ जाओगे. Do you have any idea? क्लास 9th में Ma'am, which chapter are we doing? चैप्टर 7. Do you have any idea कि 9th में कि पढ़ना Okay, भी ma'am. पड़ेगा? ऐसा पता है आप लोगों को? Do you know this? ओहो प्रगुन देखो, Afternoon, रुद्र ma'am. कि तुम्हें रुद्र ने बुलाया है.
That's what Rudra is saying for me. मैम झूठ बोल रहा है। मैं व्हाट्सएप की चैट भेजूं? No, I need full proof. मुझे screenshots चाहिए. तो only then I'll believe. यस मैम, मैं भेजता हूँ फिर। बुक नहीं भेजी गई, बुक की फोटो नहीं भेजी गई प्रगन तुमसे, है ना? कुंजल बेटा, send me a picture only. Don't take so much time for the PDF. Mom, done. Thank you. Mom, what do you have to? We are doing chapter 7, civilizing the natives and educating the nation, Ma'am, which is very important ma'am, for you but we, people. Yes. ma'am, but we have not done the full chapter of chapter 6. We were doing long नहीं answers. मैम, वी हैव डन मैम। You have done. नहीं किया मैम, सिर्फ Ma'am, we have 8 done. क्वेश्चन तक किए थे। मैम ने शशि मैम ने आई थिंक पीडीएफ भेजा ना ग्रुप में। यस मैम, फोटो यस मैम ग्रुप पे। मैं वो चैप्टर 7 का है आई थिंक। नो, चैप्टर 6 का ही भेज दिया उन्होंने। ठीक है, एक बार चेक करना। नहीं आंसर्स, चैप्टर 6 का पीडीएफ नहीं भेजा मैम ने। मैम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भेज लॉन्ग का नहीं भेजा है, कोई बात नहीं, जितने का भेजा तो ठीक है, जो नहीं भेजा है आई व्हेन यू विल मीट इन स्कूल देन आई विल हेल्प यू आउट विद द आंसर्स। ठीक है, shall we start? ओके मैम। It's a very nice chapter which is Yes, ma'am, talking we about can start. civilizing the natives and educating the nations. Natives कौन होते हैं? What do you mean by natives? Ma'am, the people who are born and brought up in the same area of that, The they people are who known are as native. born and brought up in that particular area. So we people are natives of India, right? Some of us are natives of Bareilly. Some of you may not be the natives of Bareilly. है ना? So the area where we have been born and brought up, we are known as natives of that area. So here, the Britishers, they came up with another new notion or another new idea. Now they wanted to civilize the nation. Which nation are we talking about here? Ma'am, India. India, right? Now they wanted to civilize India, right? And educate the natives. और जो natives थे उनको वो educate करना चाहते थे. They wanted to educate the people of India, right? This is what the Britishers thought of doing. What do you think? Will the people be happy with it? No. No. Pragun, I have got the screenshot of yours. तुम मुझे दक्ष ने, sorry, रुद्र ने भेज दिए. This is very bad. You cannot talk to any person like that, Pragun. हाँ जी, ठीक है. So now the thought of educating the natives. So उसके लिए what would have been the problem in this? ये तो अच्छा काम करते हैं, हमें civilize करना चाहे तो educate करना चाहे तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? What do you think is wrong here? मैम ट्रेड टू टेरिटरी। हाँ, मैम लोग नहीं मान रहे। नहीं, actually we know that, see, the Britishers have always seen Indians as savage, and one more term they've used for Indians, savage and wild, right? They thought that it's only those people are the only ones who are civilized, and the Indians are very wild and savage. They don't know how to live and all. So education has a great significance in our national life. हमें पता है education की क्या importance है. हम भी आप लोग को वही सिखाते हैं कि बेटा इंसान बन जाओ, civilize हो जाओ, थोड़ा civilized तरीके से रहना सीखो, right? That's what we try to impart in you. It is the education which forms the basis of a civic society or civic life, because the progress of civilized society depends upon the number of educated members. जितने ज्यादा लोग एक society के educated होंगे, वो society उतनी ही ज्यादा civilized होगी. Do you agree with this fact or not? क्या लगता है आपको? यस मैम। How? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Why? Why do you think? Why civilized people are only? Why only educated people are civilized? You people are educated. Are you civilized? यस Educated? यस मैम। Yes. Okay. देखो, जब हम education लेते हैं तो हमें काफी चीजों के बारे में पता चलता है. We get to know about the health and hygiene. We get to know what is right and wrong. We get to know how to treat people correctly. We get to know to differentiate between
द राइट थिंग एंड द रॉन्ग थिंग, वी लर्न अबाउट कि डिफरेंसेस जो है वो गलत है, वी लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। ये सब हमें कब पता चलता है? जब हम एजुकेट हो जाते हैं तब, है ना? तो अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो yes, that is what why education is important, because education forms the basis of a civil society, right? Needless to say that the British rule imparted Western education in arts and sciences through the medium of English to Indian people only to serve their own imperial needs. जब भी ब्रिटिशर्स ने हमें पढ़ाना शुरू किया इंडियंस को, उन्होंने आर्ट्स और साइंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़वाई, ठीक है? तो आपको पता है उन्होंने क्यों पढ़ाया इंग्लिश में? क्यों बताया इंग्लिश में क्यों पढ़ाया? बिकॉज उनकी कुछ इंपीरियल नीड्स थी। वो इंपीरियल नीड्स क्या थी? दे वांटेड टू हाईलाइट और टू प्रमोट देयर कल्चर। वो अपना कल्चर प्रमोट करना चाहते थे थ्रू दोज इंग्लिश लेक्चर्स। अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते। हाँ जी, व्हाट सारा? मैम अपना एम्पायर भी बढ़ाना चाहते। अपना एम्पायर कैसे बढ़ाएंगे? मैम मैम ट्रेड के बहाने से आके टेरिटरी बढ़ाने में। बेटा वो तो अब यहाँ आ ही गए थे, वो तो कर ही चुके थे। अब हम उसके आगे की बात करेंगे। जब वो यहाँ सेटल हो चुके थे तब वो हमारे सिटीजन्स को एजुकेट करना चाह रहे थे। वो इसलिए करना चाह रहे थे बिकॉज उनको भी तो कुछ लोग चाहिए थे जो उनके लिए काम करें, है ना? सो दे नीड फ्यू इंडियंस टू बी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, राइट? वो अपनी पढ़ाई वो लोगों को सिखाना दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारा कल्चर कितना अच्छा है, दिस एंड दैट, राइट? So nevertheless, the liberal education became instrumental not only in educational development, but also in awakening our nationalist feelings and promoting a sense of unity among the Indian people. But चाहे कुछ भी कह लो, इस एजुकेशन से उनका जो फायदा हुआ होगा, बट हम इंडियंस का भी फायदा हुआ। कैसे? जब हमने एजुकेशन पढ़ी, जब हमने एजुकेशन ली, जब हमने बुक्स पढ़ी, तो हमें पता चला कि अच्छा हमारे अंदर की जो नेशनल फीलिंग्स थी वो अवेकन हुई। वी गेट टू नो, वी रेड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वी गेट टू नो दैट हाउ we all need to come together and fight together, right, in order to gain our independence. मैम उसके बाद फाइट। What, Sarah? मैम ब्रिटिशर्स के वजह से हम लोग एजुकेट होके फाइट करी थी हम लोगों ने। Yes, exactly. So education is never wrong, है ना? एजुकेशन कहते हैं ना, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। वो हमेशा काम ही आती है, नॉलेज आपकी। यू नेवर नो आपकी कौन सी पढ़ाई आपकी कब काम आ जाए। यू नेवर हैव एनी आइडिया अबाउट इट, राइट? सो यही हमारे साथ हुआ। जब हम एजुकेट हुए, हमने चीजें पढ़ी, हमें पता चला कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, राइट? देन it was a Western education that firmly rooted in our minds the ideas of freedom and nationalism and roused the desire to overthrow the yoke of the foreign rule and to gain freedom and the self rule. जब हमें वेस्टर्न एजुकेशन मिली तभी हमारे माइंड्स में आइडियाज आए कि यार हमें तो फ्रीडम चाहिए, राइट? वी नीड सम लिबर्टी, वी नीड सम फ्रीडम, राइट? ऑल दीज आइडियाज केम इन आवर माइंड ओनली आफ्टर गेटिंग दैट वेस्टर्न एजुकेशन, राइट? हमें रियलाइज हुआ दैट नो, वी नीड टू रूट आउट दीज फॉरेन इन्वेडर्स फ्रॉम इंडिया। हमें इन सबको बाहर निकालना है, ये हमारी कंट्री है, इसे हम खुद रूल कर सकते हैं, राइट? तो ये सब आइडियाज हमें कब मिले? जब हमने वेस्टर्न एजुकेशन ली, when we read about that. Clear? Any doubt till here? नो मैम। Any doubts? No, ma'am. Okay. नो मैम। नो मैम। यार प्रगुन, तुम पढ़ भी नो रहे मैम। हो, ऐसे मत करो। देखो मुझे एक दिन में इतने सारे शॉक्स मत दो। रिवर्ट भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, क्या हो गया बेटा? प्रगुन सब ठीक है? Yes, ma'am, सब ठीक है। अच्छी बात है, चलो गुड। So before the advent of the English, advent का मतलब क्या होता है? What's the meaning of advent? मैम होने। What, Sarah? What's the meaning of advent? Advent of the English. Advent का मतलब क्या होता है? नहीं पता किसी को? मैम वो हेड होता है किसी एडमिनिस्ट्रेशन का या किसी Are you चीज का। serious? Are you serious, Sarah? मैम लाइक मैम जो किसी को ऐड करता है। कुछ भी
सेंटेंस पढ़ो. जैसे कि Before the advent of the मैम English, advent of British Raj. Advent का मीनिंग नहीं पता यार. Start किसी चीज का आना. The coming of English. The advent means the arrival of Britishers. This is what advent is. Okay. मैम माय थर्ड एडमिन Advent नहीं, advent. AGVENT. So before the advent of the English, both Hindu and Muslims had their separate educational institutions. आपको पता है ना मुस्लिम से कौन सा एक एजुकेशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है? हम आज क्या बोलते मदरसा. हैं? मदरसा, right? Muslims के Yes, मदरसास थे and Hindus के, we know we had those gurukuls, right? जो गुरुकुल yes, मैम. सिस्टम होता था, है ना? तो पहले हिंदूज और मुस्लिम्स के अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे. Then the Muslim boys got the basic education in the maktabs from where Maulvis for higher education, right from the Maulvis, and for higher education they went to madrasa, right? पहले बच्चे जाते थे मकताब्स में, जहाँ पे मौलवीज में सिखाते थे. उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मुस्लिम बॉयज यूज्ड टू गो टू द madrasa. The Hindu children too learned Persian in the mosques and Sanskrit was learned from pandits. हिंदू बच्चे भी पर्शियन पढ़ते थे. पर्शियन वो मॉस्क में जाके पढ़ते थे, एंड जो उन्हें संस्कृत पढ़ाते थे वो पंडित पढ़ाते थे. who taught in the temple schools called पाठशालास. पहले क्या होती थी? गुरुकुल्स और पाठशाला. पाठशालास, right? So now what were the early efforts? क्या efforts के Britishers ने to bring education to India? In the beginning, the East India Company thought that the development of education was not necessary. शुरुआत में लगा कि education सेक्टर को डेवलप करना जरूरी नहीं है, right? Okay. Then yeah, actually it was more concerned with making profits than anything else. जब वो इंडिया में आया तो उनका मेजर कंसर्न क्या था कि कैसे भी करके anyhow they just had to earn more and more profit. They have to earn more and more profit. They have to earn more and more money, right? And because the company was after all commercial concern, because company का मेजर क्या था? commercial concern. अपने commercial purposes और motives की वजह से वो इंडिया आई थी, इसलिए उसने इंडिया को कॉन्कर किया था. After some time, however, the need for low paid clerks. अब उनको चाहिए थे कोई ऐसे वर्कर्स जो कम पैसों में उनका काम कर रहे हैं, क्लर्क्स वगैरह एक्सेट्रा, जिन्हें थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आती हो और उनको जॉब के लिए मिल जाए. अब जब उसकी नीड आई तो अरे यहाँ के तो लोगों को इंग्लिश आती ही नहीं थी. That is when they thought of educating the people. See, हमने अभी initially पढ़ा था ना कि when they started these education institutions, ये हमारे भले के लिए नहीं करा था उन्होंने अपनी imperial needs के लिए किया था. तो उनकी imperial needs क्या थी? What were the imperial needs? What were their imperial needs? मैम सॉरी. What were the imperial needs of the British? मैम टू टेक्सटाइल्स मैम, सोर्सेस ऑफ ट्रेड. क्या बोल गया? मुझे कुछ सुनाई भी नहीं गया. Yes, Kai. What were मैम the उन लोग को मैम They need clerks for करने their के लिए work. मैम टेक्सटाइल्स. Exactly, very good, Sushant. They need clerks for their work. Low paid workers चाहिए थे, low paid clerks चाहिए थे जो कम पैसे में उनका काम कर दें, और वो उन्हें इंडियन से अच्छे कहाँ मिल सकते थे. So when they needed that, this need compelled them to take interest in the development of education. उनकी इस need की वजह से उन्होंने education sector में development करना start किया. So few educational institutions which were supported by the company's government were established at Calcutta, Madras and Banaras in 1781 and 91 respectively. Right. फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ अपने institutions established किए Calcutta, Madras और बनारस में. The Fort William College was also started in 1801 at Calcutta. Christian missionaries also started Wilson College at Bombay and the Christian College at Madras and St. John's College at आगरा. ये सब कॉलेज उन्होंने स्टार्ट किए थे जहाँ पे पीपल यूज्ड टू गो एंड गेट देयर एजुकेशन. अब जो ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश थे इनके बीच में हुआ एक आर्ग्यूमेंट और डिबेट. अब पहला क्वेश्चन तो याद है, हु वर दीस पीपल? सुशांत, रीड एंड टेल मी हु वर ओरिएंटलिस्ट एंड हु वर एंग्लिसिस्ट्स. Okay, ma'am. Orientalist, a group of people which advocated teaching of Sanskrit, Persian, and Arabic learning and local languages. Anglist, a group of people which advocated the teaching of Western learning with English as the medium of education. Okay.
तो as he has told us कि ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि लोगों को संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक भी पढ़ाई जाए, लोकल लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाए, एंड द एंग्लो स्टूडेंट ग्रुप ऑफ पीपल चाहते थे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न लर्निंग होनी चाहिए विद इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। ठीक, तो ये दो डिफरेंसेस आ रहे थे। अभी हमारे यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है क्या है, ऐसा ही होता है, एंग्लो स्टोलिक साउंड चल रही है, ओरिएंटलिस्ट थिंकिंग चल रही है। मैम इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट। As per the new education policy, a child has a right to study, like up to 5, he has a right to study in whichever language he wants. जो भी उस एरिया की वर्नाकुलर या लोकल लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है। ठीक है, ओके। आरफ कहाँ चले गए बेटा? So interference of the British government in the education system of India led to the controversy between these two groups. ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश के बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई। द एंग्लिश वाज लेड बाय थॉमस बैबिंगटन मैकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम से अंडरलाइन कर लो, थॉमस बैबिंगटन मैकले एंड जेम्स मिल। दे एडवोकेटेड द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न लर्निंग। जेम्स मिल का नाम याद है, कहीं और पढ़ा था पहले? यस मैम, चैप्टर 3 में मैम। क्या पढ़ा था इनके बारे में? मैम मैपिंग ऑफ इंडिया, नहीं मैम, मैम हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैम बुक लिखी थी। ये हमने क्लास 7 में ही पढ़ा था, राइट? ही इज द वन हु रोट द हिस्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। James Mill divided Indian history into which 3 categories? मैम मैम इन 2 categories। मैम हिंदू मुस्लिम एंड मैम 3, हिंदू मुस्लिम एंड British. ठीक है, so the English were led by Thomas Babington Macaulay and James Mill. They advocated the teaching of Western learning with English as a medium of education, whereas the Orientalists like William Jones and Colebrook, underline these names, right? They advocated the encouragement of Sanskrit, Persian, and Arabic learning. Right, चाहते कि जो local vernacular language उन्हें पढ़ाया जाए, and promote that the modern language should be given through local language. जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है या वो मॉडर्न लैंग्वेज में सिखानी है उनको अगर, तो वो भी हम उनकी लोकल लैंग्वेज के थ्रू सिखाएं। बोथ जोन्स एंड कोलब्रुक शेयर अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। ये दोनों ही एंशिएंट कल्चर को काफी रिस्पेक्ट करते थे। दे सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस, राइट? They also went about discovering Indian ancient texts, understanding their meanings, translating them, and making their findings known to others. जो भी चीजें वो ढूंढते थे, पढ़ते थे, वो दूसरों को भी बताते थे उसके बारे में। This project, they believed, would not only help the British to learn from Indian culture. इस प्रोजेक्ट की हेल्प से ब्रिटिशर्स तो इंडियन कल्चर के थ्रू से सीखेंगे ही सीखेंगे, but it will also help the Indians to rediscover their own heritage and understand the lost glories of the past. जैसे कि हमें पता है कि जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमें इंडिया के बारे में तो कुछ बताया नहीं। They already portrayed India as a nation of losers, that we have not done anything, we are the biggest losers in the world. So when such nice people like Jones and Colebrook were there, they studied, they rediscovered our history, and they shared it with others so that the Indians should also know what they have lost, what great past did they have, right? Then in this process the British would become guardians of Indian cultures as well as its masters. अगर हम ब्रिटिशर्स ऐसा करेंगे तो वो इंडियन कल्चर को गार्ड भी कर रहे हैं, उन लोगों को उसके बारे में बता भी ना, उनके मास्टर्स भी बने। So which was a nice way to do, but ब्रिटिशर्स को तमीज की चीजों कोई पसंद आनी नहीं थी। That is why they did not like it. From the early 19th century, many British officials like James Mill and Macaulay begin to criticize the Orientalist vision. उन्होंने Orientalist के vision को बहुत ही criticize किया, right? And they were of the opinion that knowledge of East was full of errors and unscientific. उन्हें लगता था कि हमारे हिस्ट्री के थ्रू या हमारे चीजों में जो भी पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो सब बहुत ही एरर्स हैं, उसमें बहुत ही गलतियां हैं, बिल्कुल ही साइंटिफिक नहीं है, लाइक लॉजिकल नहीं है। So the literature was non-serious and light-hearted, so they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. इसलिए उन्होंने अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर को पढ़ाने में कोई भी प्रमोट नहीं किया। James Mill was of the opinion that the aim of education ought to be teach what was useful and practical.
जेम्स मिल का मानना है कि हमें लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल और यूजफुल चीजें ही सिखानी चाहिए. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made. कि जो हमने advancements किए हैं हमें लोगों को उनके बारे में बताना चाहिए, वो पढ़ाना चाहिए, right? Rather than with the poetry and sacred literature of the old. मुझे लगता है कि literature, poetry किसी भी काम में सब बकवास है. What is your view on this? What do you think? Were they right? No, ma'am. Hmm? No, ma'am. Okay. Right. Okay, so this is not right. Okay, what do you think? Do you respect a sacred Ma'am, it literature? carries the economic. Ma'am, it carries the economic and social poetries and ma'am views of people. Hmm? Ma'am, it carries the like views of people and like poetry And of when we many. read the histories or Vedas nowadays, we get to know so many scientific things are also there, right? जो भी Indian culture है, उसकी कहीं ना कोई scientific value तो है ही. Yes, ma'am. Ma'am, everything is connected to Everything is science. connected with science, right? So it's just Yes, an effort. yes, ma'am. Gurus of ma'am, Indian gurus already discovered ma'am atoms and all in Hindi, and after that, John Dalton explained. Hmm. Okay. Right. So now if we talk about, yeah, मैंने सुना है कि प्रगुण कुछ दिक्कत हो रही है बेटा? नो मैम. मेरे पास मैसेज आया है. मैंने तो कुछ नहीं किया. क्या दिक्कत परेशानी बताओ. मैंने कुछ नहीं किया. बड़ी गलत बात है यार, बड़ी गलत बात है. आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब हाउ कैन यू से सो. मैं कुछ भेजता हूँ फिर. वेरी बैड प्रगुण. मैंने तो कुछ नहीं कहा. वेरी बैड प्रगुण. मैंने क्या किया. कोई बात नहीं, पढ़ लो थोड़ा सा. स्काई बहुत, देखो बेचारा मैं स्काई. बड़ी तरह हूँ. ठीक है. राइट. अभी तक नाउ मैकले ऑन द अदर हैंड सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड सोसाइटी. मैकले को लगा कि इंडिया बहुत ही अनसिविलाइज्ड सोसाइटी है, बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है, गवार लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं आता. सो दे नीडेड टू बी सिविलाइज्ड. नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड. मुझे लगता है कि अरे इंग्लैंड ने जो पढ़ाई की, जो चीजें प्रोड्यूस की है, जो नॉलेज इंग्लैंड दे सकता है. रघुन माइक तो ऑफ कर लो बेटा. ठीक है. तो जो नॉलेज इंग्लैंड जो वेस्टर्न एजुकेशन दे सकती है, उसके आगे तो ईस्टर्न एजुकेशन कुछ है ही नहीं. बहुत ही प्रिमिटिव है, राइट? सो ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश would allow Indians to read some of the finest literature that the world had produced. It would make them aware of the developments in the Western science and philosophy, and teaching of English could be thus a way of civilizing people, changing their taste, values, and culture. For the spread of English education, Maclay did not support even some Indian, got support from some Indians like sorry, like Raja Ram Mohan Roy, who realized the importance of English education as a means of bringing modern knowledge to the people of India. राइट. कुछ इंडियंस भी थे जिन्होंने मैकले को सपोर्ट किया कि यस, इंग्लिश लोगों को पढ़ानी चाहिए, जिसकी हेल्प से वो लोग जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं, मॉडर्न चीजें हैं, उनके बारे में जान पाएंगे, उनको पढ़ और समझ पाएंगे. राइट. Following Macaulay's minutes, the English Education Act of 1835 was introduced. Now, yeah, so it was produced. Now, yeah, in this, it was a decision to make the English a medium of instruction for higher education. उन्होंने decide किया कि जो higher education लेंगे लोग, वो English में ही लेंगे, and to stop the promotion of Oriental institutions like Calcutta, Madras, and Banaras Sanskrit College. ठीक, उनका मानना था कि जो भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है, हम इनको बिल्कुल भी हम प्रमोट नहीं करेंगे. समझ में आया यहाँ तक? Yes.
Yes, ma'am. गुड। रुद्र चौधरी, आपको समझ में आया? यस मैम। आप इतनी चैटिंग क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं लगाना है आपको? बताइए जरा, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाय। बताइए रुद्र चौधरी, ऐसा क्यों करा आपने? क्यों आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये क्लास चैप्टर 6 सबका कंप्लीट हो चुका है? मैम लॉन्ग आंसर का यस मैम। Everybody has Ma'am, completed chapter long 6? answers. मैम लॉन्ग आंसर इज नॉट कंप्लीट। तो कर लो क्वेश्चन आंसर्स में, कोई दिक्कत थोड़ी आनी चाहिए। किसमें दिक्कत आ रही है बताओ मुझे, विच आंसर जो सब पे फेसिंग प्रॉब्लम है? बताओ, बोलो दक्ष, टेल मी दक्ष, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है? आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज व्हेनेवर द स्कूल विल रीओपन एंड व्हेन यू विल बी हैविंग योर क्लास, you have to submit your history notebooks that day. Okay? ओके मैम। Okay, ma'am. Okay, you have to submit your books that day, notebooks, right? Now the next topic is Woods Dispatch and Education. Chalo, who will read? Ma'am, may I? Read, Sarah. A committee was set up in 1854 to recommend improvements in education. On the basis of committee report, the chairman of the board of control, Sir Charles Wood, prepared a plan which after his own name called Wood's Dispatch. Its main recommendations were as follows. First, the aim of education was to be diffusion of arts, science, philosophy, and literature of Europe. Second, more and more colleges, high schools, and primary schools were to be opened. Third, more attention was to be paid to the elementary education. Fourth, it was decided to establish universities at Kolkata, Bombay, and Madras on the model of London University. Ma'am, done. So यहाँ पे कहता है committee was set up in 1854 to recommend the improvements in education. Education में भी improvements को recommend करने के लिए committee set up की गई. On the basis of the committee's report, the chairman of the board of the control, Sir Charles Wood, prepared a plan which after his own name is called Wood's Dispatch. जो चार्ल्स वुड ने एक प्लान बनाया था, उसका नाम क्या रखा गया? Wood's Dispatch. And उसमें जो recommendations में पहला recommendation ये था that the aim of education was to be diffusion of arts, science, philosophy and literature of Europe. ये सब चीजें हमें लोगों तक पहुंचानी है, उन्हें बताना है. This is the main motive of education. More and more colleges and high schools or primary schools were to be opened. ज़्यादा schools खोलने हैं. Then more attention was to be paid on the elementary education. Elementary education में ज़्यादा information pay करनी है हमें, right? It was decided to establish universities at Calcutta, Bombay, and Madras, and the model of London University. जैसे लंदन यूनिवर्सिटीज में होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे भी institution set up करने हैं education के, right? Then the local schools and the new rules. Who will read? Who will read? May I read? Read, Sushant. Okay. Local schools and new rules. In 1830, Williams Adam, a Scottish missionary, was asked by East India Company to prepare a report on the progress of education in vernacular schools. He wrote, "There are over 1 lakh pathshalas in Bengal and Bihar. These were small institutions with no more 20 students each, but total number of children being taught in these pathshalas was considerable, over 20 lakhs." राइट. सो देखो अब क्या हो गया यहाँ पर,
जो लोकल स्कूल्स आए in 1830 विलियम एडम ही वाज अ स्कॉटिश मिशनरी, राइट, जिनसे बोला गया इसी ने हमने कि आप एक रिपोर्ट बनाइए कि हाउ टू प्रोग्रेस एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स। जो वर्नाकुलर स्कूल्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वर्नाकुलर स्कूल्स? Ma'am, the schools which uses local The local languages. schools, no, वर्नाकुलर का मतलब हमेशा लोकल लैंग्वेज थोड़ी होता है, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल। उन्होंने कहा जो लोकल स्कूल्स खुले हुए हैं ऑलरेडी उसमें हम एजुकेशन कैसे प्रमोट करें। सो देन विलियम एडम रोड that there were over 1 lakh पाठशालास in Bengal and Bihar. जो local schools है, right, पाठशालास थी Bengal and Bihar, there were over 1 lakh. There were small institutions with no more than 20 students each. काफी small institutions, जिसमें एक institution में 20 बच्चे कुछ होते थे. But the total number of children being taught in these पाठशालास was considerable, was around over 20 lakh. करीब 20 लाख बच्चे इन पाठशाला से अपनी एजुकेशन ले रहे थे, right? So these institutions were set up by wealthy people or by the local community. At times they were started by a teacher guru. कभी-कभी उन्हें कोई teacher guru start करता था. Now the system of education was very flexible. यहाँ पे जो system of education था इन पाठशालास में या मदरसा में बहुत ही flexible था. यहाँ पे कोई fixed fee नहीं थी, printed books भी नहीं थे, orally information transfer की जाती थी, right? Then there was no separate school or building, no benches or chairs, no blackboard, no system of separate classes. सब बच्चे एक ही साथ बैठते थे, एक ही साथ पढ़ते थे, right? No roll call registers, no annual examinations, and no regular timetable. ये सब चीजें वहाँ पे थी ही नहीं. In some places, classes were held under a banyan tree. ये जैसे हम बता रहे हैं कि पहले पाठशाला में कैसे classes होती थी, एक बरगद के पेड़ के नीचे, in other places in the corner of the village shop or temple, और एट द गुरुज होम, कहीं पे भी क्लास लेते थे लोग. फी डिपेंडेड ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स की, जिसकी पेरेंट की इनकम है उसके अकॉर्डिंग फी दे दी, राइट? द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर एंड द टीचिंग वाज ओरल. द गुरु यूज को एक सेट पर्टिकुलर पैटर्न था कि ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना है. गुरु डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाना है, राइट? एंड द स्टूडेंट्स were not separated out into different classes. कोई अलग अलग क्लासेस भी नहीं थी. All of them sat together in one place. सब एक साथ एक ही जगह पे बैठते थे, right? The guru interacted separately with groups of children with different levels of learning. This flexible system was suited to local needs. अभी locals के लिए तो बहुत ही convenient था, उनको तो कोई टेंशन नहीं थी, ना फीस की, ना यूनिफॉर्म की, ना किसी भी चीज की. So local needs के लिए तो बहुत ही better था ये. Then the flexible system was suited to local needs. For example, जब भी harvest season होता है तो classes नहीं होती थी, तो बच्चे busy होते थे harvest में, right? When the rural children often went to work in the fields. The pathshala started once again when the crops had been harvested and sowed. This meant that even children of peasant families could study. इसका मतलब ये था कि पढ़ते सब बच्चे ही थे, peasant families के भी और big farmers के भी. ऐसे नहीं किसी particular के लिए था और किसी के लिए नहीं था. After 1854, the company decided to improve the old system. फिर company decide किया कि हम इस old system को improve करेंगे. A number of new teachers were appointed. And each teacher was asked to submit a report and take classes according to a regular timetable. सबसे कहा है कि आपने report submit करो, एक particular timetable के according classes लो. Teaching was now to be based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination. Annual exams होंगे, बच्चों ने क्या साल भर में पढ़ा वो चेक किया जाएगा. And students were asked to pay a regular fee. Many new rules and an annual routine was given to the schools. Now, like they changed it all. जैसे अब हम पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ाई शुरू हुई. Guess the meeting is about to end any moment. Tomorrow we'll start with the drawbacks of the new education policy. Clear? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Okay, bye. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Have a nice. Bye, bye. Bye, ma'am. Bye, beta.